Hello, Assalamu alaikum. Currently, I'm here in Chicago, USA, and I'm here with a very special person, जिन्होंने IB से graduate किया 2017 में in business, masters किया in business, and currently he is working in business field as well. तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कोई बंदा यहाँ पर पढ़ाई के लिए आ सकता है, अपना वीजा कैसे फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट करवा सकता है, किस तरह अच्छी जॉब ले सकता है और आखिर में अपना पासपोर्ट ले सकता है, मे बी. Yes. All right. So without wasting any more time, let's get into the interview. So मुस्तजाब, मैं यहाँ पे कैसे यूनिवर्सिटी फाइंड करूँ, सिटी फाइंड करूँ और प्रोग्राम फाइंड करूँ सबसे पहले तो? So सबसे पहले तो you need to identify what is your financing source. Okay. So if you're self-financing yourself and you're coming from Pakistan or any South Asian country, so the 90% probability is that you have a limited budget. Yes. So in a limited budget, you should identify a university that does not cost you an arm and a leg. By that I mean it does not cost you more than $50,000 Okay. to complete the program. सही है. तो उसमें आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो अंडर दिस प्रोग्राम स्टेट और प्राइवेट मिक्स होती हैं कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और 50,000 के अंदर अंदर आपको पूरा प्रोग्राम करा देती हैं. ओके. एंड फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक तो प्रोग्राम आपने आइडेंटिफाई करना है यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस के साथ. सही है. एंड व्हाइल यू डूइंग इट तो आप यूएस वर्ल्ड रैंकिंग पे जाके उसकी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं. अच्छा, वी आर नॉट गोइंग फॉर आईवी लीग्स एंड द रीजन वी आर नॉट गोइंग फॉर आईवी लीग्स इज दैट दे चार्ज a lot of money and we're not going to finance it from our own pocket. So now coming to the city part. Yes. I would suggest where you have your network, where you know people, where probably you have family, you can spend some time with them, you can live with them. So find your people, be it your friends, be it your colleagues, seniors or your family members. So वहाँ पे आपको settle in होने में easy हो. उधर आप उनके साथ रहना चाहें तो 3-4 महीने, साल, जितना भी टाइम आप रुक सकते हैं तो उनके साथ रुकें. एंड दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर लिविंग कॉस्ट. Too long answer, but it's okay. प्रोग्राम कैसे फाइंड करूँ मैं? Aim for a STEM major, something that's relevant to your bachelor's. Okay. You don't need to be super conscious about the program you're choosing, but choose something that's a STEM major and you can get a decent job on that. Okay, very nice. What exactly is a visa packet? तो यूजली फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक ड्राफ्ट I-20 भेजती है. ओके. सो इट कैन बी अ ड्राफ्ट और इट कैन बी अ फॉर्मल I-20. सो दैट्स योर बेसिकली योर लेटर थ्रू विच यू नो नाउ यू कैन अप्लाई फॉर अ वीजा इंटरव्यू. यू कैन शेड्यूल एन F1 वीजा इंटरव्यू. F1 इज अ कैटेगरी ऑफ US वीजा. तो आप शेड्यूल करेंगे एम्बेसी के साथ एंड व्हेन यू गो देयर सो यू शुड हैव योर I-20 में there's a section which tells how much cost is related to your studies over here. Okay. So it includes your tuition and your living cost. Living cost. So usually they want to see liquid या non-liquid cash of about 1.5 times of that cost. So let's say अगर आपकी cost $50,000 है तो आपके अकाउंट में या आपके पास कैश या आपकी जो टोटल वेल्थ स्टेटमेंट है आपके पेरेंट्स की उसमें $60,000 to $75,000 होने चाहिए. तो this is the way you will present it to the visa officer. ओके. और वीजा पैकेट के साथ कुछ स्पेसिफिक वीजा क्वेश्चंस भी होते हैं which we have to prepare. What are those? So they will ask you why do you want to pursue this program. So you will have to go through your program curriculum and what are the key things you find very interesting in that program. So it shows that you have done your due diligence, you have studied, you understand what you are doing over there. दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो पास्ट है, जो आपने पढ़ाई की है या पाकिस्तान या जिस भी मुल्क में आप हैं तो उसमें आपने जो काम किया, हाउ डज इट रिलेट टू व्हाट यू आर डूइंग. अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है कि विल यू कम बैक, डू यू वांट टू स्टे इन द यूएस? इसका क्या जवाब है? माय गोल इज टू अपग्रेड माय प्रोफेशनल एंड माय टेक्निकल स्किल सेट. दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू द यूएस टू स्टडी फॉर दिस प्रोग्राम. वंस आई एम डन विद द प्रोग्राम एंड आई हैव डन दोस द STEM practical training part, I'll come back to Pakistan and implement all my learnings over here and be with my family. Alright, very nice. First tell me कि यहाँ पे expenses किस तरह के होते हैं और कितना खर्चा होता है on average? Your overall cost can be anywhere from $800 to $1,200 per month as a student. It includes your food, it includes your rent, it includes your basic utilities. आपको कुछ आगे पीछे खाना पीना फायर करना है. It does not include lavish dining. It does not include buying your own car. It does not include traveling. कितने पैसे में कमा सकता हूँ यहाँ पे ऑन कैंपस जॉब से ऑन एवरेज? सो देयर इज अ GA पोजीशन जिसको ग्रेजुएट असिस्टेंट पोजीशन कहते हैं. सो GA होती है, TA होती है, RA होती है और एक नॉर्मल कैंपस जॉब होती है. तो नॉर्मल कैंपस जॉब जो होती है जिसके अंदर बेसिकली यू आर वर्किंग इन द कैफेटेरिया, यू आर वर्किंग इन अ लाइब्रेरी एज एन असिस्टेंट.
तो उसके अंदर आपको मिनिमम जो स्टेट की वेज रेट है वो मिलता है. सो दैट मिनिमम वेज रेट राइट नाउ फॉर इलिनॉय इज अराउंड $14. Okay. तो आपको वो पर आवर मिलेगा. यू कांट गो बिलो दैट. उसके बाद आपके पास जीए और आरए पोजीशंस आती हैं, ग्रेजुएट असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंट. ग्रेजुएट असिस्टेंट इज फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स, रिसर्च असिस्टेंट इज फॉर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स. Okay. उसके अंदर आपको एक अच्छी पे रेट मिलती है, एंड फॉर यूआईसी इट वाज प्रीटी गुड. इट वाज अराउंड $34-36 per hour. Okay, nice. Obviously you get deducted for tax, but वो डिडक्ट होकर $2-3 आपका कटता है. But that's a good amount of money, and however there is a limit of working only 20 hours. Okay. तो जब आप 20 hours काम करते हैं you still make like around $2,400-2,500. Okay. सबसे प्राइम जो लेवल है वो टी है, जो टीचर्स असिस्टेंट है. उसके अंदर आपकी फीस जो होती है वो 75% ऑलमोस्ट कवर हो जाती है. And plus, for every 20 hours you work, you get $36-34. You try for public universities, don't go for private universities. Public universities have larger budgets, so they're not short on jobs. How can I ready myself for a full-time job? तो नेटवर्किंग करना जरूरी इस तरह से है कि आप अपना एक साल के ऊपर एक रिलेशनशिप बिल्ड करें मल्टीपल लोगों के साथ, जो इवेंचुअली आपके बिहाफ पे वाउच कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं. द लॉन्गर यू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप फॉर, you are in a solid position to establish a good credibility, and then they are also comfortable vouching you or referring you into different positions. Let's talk about transitioning your study visa into a H-1B, because everybody is complaining here in the US. What's this problem and what's the transition path? So now USCIS has done like a filtration process where one person can only apply for one from one company. If you apply to multiple companies, तो cancel हो जाती है petition. Okay. Try to find a mid-size employer जहाँ पे आप value उनको दिखा रहे हैं, Okay. and they agree. Try to have them agree to your H-1B sponsorship before you sign up, and ask them to give you a date. तो वो अगर आपको डेट दे देंगे, then you can also include that in your contract. Okay, very nice. What are the entrepreneurship opportunities here in the US? यहाँ पे entrepreneurship is a big thing, और if you have something that's strong, आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर. If you are on a right path and you're patient, it won't take ये 6 महीने में 2 महीने में नहीं हो जाएगा कि you make a lot of money, but the scale is you can't even compare it. So business कैसे करना है, आप community में involve हो, आप don't think your visa will be a burden. I can tell you from personal experience, आपको अगर intent है आपकी, you are excited to do it, do network with people who are working at Oracle, Microsoft and Amazon, but also network with people who are running their own business. How difficult it is to open your own company with the work? Can I do this? So legally in the US, if you are on an H-1 visa or you're on your OPT, तो आप अगर job कर रहे हैं, so you can open a company, but you can't work in the company full time. Okay. However, there is again H-1B बहुत ज़्यादा भी रिवाइज हुआ है, तो Yes. उन्होंने H-1B entrepreneurship वीजा भी निकाला है. Very nice. तो यूजली आप H-1B अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर सकते अगर आप कंपनी के फाउंडर हैं, बट यू कैन डू इट नाउ. सो इफ यू हैव अ क्रेडिबल बिजनेस मॉडल, it creates value to the US economy. Very nice. It has a potential to generate revenue. It's not generating revenue अभी, तो वो भी फाइन है. तो you can petition yourself for the H-1B entrepreneurship visa. Now it gets approved or not, that's something that I'm yet to explore. Yes. But it's a doable pathway. And by 3 years, your business will be producing revenue, जिसके बाद अपने आपको E2 वीजा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या अपना नेशनल इंटरेस्ट पेपर भी फाइल कर सकते हैं, if that is something जो कि US इकोनॉमी को या US सिस्टम को ओवरऑल हेल्प कर रही है. Very nice. Can you please talk about some positives and negatives living here in the US? हाँ, so US के अंदर it's all about money. Okay. इधर का हेल्थ केयर सिस्टम, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. बहुत ज़्यादा कल्चर शॉक मुझे फील हुआ था जब मैं पाकिस्तान से मूव हुआ था. वहाँ पे तो आप डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर आपके फ़ोन कॉल पे होता है, एंड यू गेट ऑल द सर्विसेज देयर. यस, यू नीड टू पे, बट इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी. यहाँ पे पैसे भी देने के लिए तैयार हो तो बंदा डॉक्टर आपको देखने के लिए तैयार नहीं है इजीली. तो एनीवेज पॉइंट ये है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज कैपिटलिस्टिक. So if you are a driven person, you're ambitious and you want to achieve a lot of things, then US is for you. Makes sense. And would you take any job experience before coming here? For example, people say कि at least 1 साल का experience होना चाहिए before coming to moving to any abroad country.
this is all crap. Would you want to give any advice to those people in India, Pakistan and Bangladesh who are sitting and watching this video? Who they could be students, they could be working professionals. What advice will you give to them? हम बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के साथ कंज्यूम होते हैं और अपनी जो इंस्पिरेशंस हैं या वट एवर यू वांट वी टाई इट डाउन टू सोशल मीडिया. आई वुड से डू इट द अदर वे. रीड बुक्स. और बुक्स पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अनबायस्ड और एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड यू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एंड अगर आप अपने काम की बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी बुक्स पढ़ाई के बारे में मतलब इट्स योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस टेक्नोलॉजी और समथिंग इनोवेटिव यू कैन रीड मोर अबाउट दैट. और इफ़ यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस तो आप फाउंडर्स की स्टोरीज पढ़ें. लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी. ये तो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट होगी. एक्सपीरियंशियल पार्ट के अंदर यू नेटवर्क विद पीपल हु हैव डन दैट इन द पास्ट एंड दे आर मेनी South Asian descent Pakistan people in the US who have built businesses from scratch or who are doing really well in their jobs. Very nice. So talk to them and talk to them once you graduate from your whatever bachelor's university you are in. ताकि आपको पहले से ही एक ना प्लान बनाना शुरू करना है आपने क्या करना है. Yes, makes sense. तो एक साल के बाद you are ready to go in that direction. Again, you will not be sure of what direction you want to take, but that is the uncertainty. That's the chaos in life, and you need to navigate through that chaos. Very nice, Mustajab. I hope that people who are listening to this right now, this discussion was helpful for them. Okay. And if they have any more questions, please write them under the comment in the video, or you can also reach out to Mustajab on LinkedIn. Yeah, LinkedIn or Instagram. Or on Instagram as well. I will share his link under the video. So thanks a lot, Mustajab, for your time and energy and your knowledge sharing. Thank you for giving me the opportunity. All right. And thanks a lot, guys. I hope you guys learned something from this. Here's Saif signing out, and I will see you in the next one.